and much more. This year, like every year, the festival was born with the thought that we would look at how built heritage and the arts can come together. And primarily, one of the motives of teamwork always has been to show that the arts can create wealth. Not just intangible wealth, but tangible wealth that bankers and governments understand. People don't realize that the arts does create jobs, does contribute to local economies, does contribute to the life and citizens of that place. Many artists and art forms are still seen as basket cases for governments to donate to. No, they're not. And we must continue to stand up for the rights of every artist to be able to express freely and show the other. Writers write not necessarily to entertain. Writers and poets write because they have a volition to write. They're able to project the other, see into the future, make sense of our troubled times, and put it all together in these wonderful words that we read in their books. And we must celebrate them. Yes, there are 113 festivals that have grown out of the Jaipur Literature Festival across the region. I hope there's 1,000. Every city, every town, every village must have a festival because there's so much talent in our country. We, from birth to death, celebrate the arts. We sing, we dance, and we tell stories, and all 1.3 billion of us in India feel that we have a talent. We are the only country in the world where the classical traditions continue to flourish, not because of subsidy, but in spite of them. The operas of the West and the great orchestras and the symphonies are supported by subsidy. Today, our young people continue to go out to learn their Kathak and their classical music, their violin, Carnatic forms, and Odissi and so many other dance forms. Our ragis continue to sing in the Gurdwara. We must celebrate together. The arts can really bring a difference, create opportunities, make our lives better. And we invite you to join us on our 10th anniversary. It's still fledgling. We're still a young festival. Yes, we may have grown to become one of the largest, but there's a long road ahead. We live in troubled times. We need to make some sense of them, and we need to celebrate as well at the same time. So I invite you all to join us on the 19th of January at Jaipur. For us, it will be a privilege to receive all of you. It tends to get a little bit more crowded than it is in this room. So bring your comfortable shoes, and I promise you that sitting there, like I said on the front lawns, you're able to travel the world and learn so much. Once again, thank you all so much. I'd really like to take this opportunity to thank our wonderful sponsors, without which none of this would be possible. People don't realize that as hundreds of thousands of people pour through our gates, all of that is made possible only because somebody signed a check at the end of the day. To Z, for believing in us, Shriyasi, thank you so much for renewing your pledge to the festival. It's not something that one normally would look at, but I think you and Puneet have really backed us. Thank you very much for making this happen. To Cox and King, our new partners, though Sandeep and I go back a million years, really thank you for making this happen. And we'd be delighted. We really need to make tourism and culture and all of this put together and work on creating an economy that sustains itself in spite of what happens around us. My colleagues will thank all of you at the end of the show. It's now time really for the heart of what we have come to hear today. My greatest respect for one of the most incredible writers and poets of our time, filmmaker, actor, a person with great humility. I remember Gulzar Saab was with us
when the announcement came about the nomination that he received for his lyrics in Jaipur. We were fortunate to be there with him. It was an incredible honor. I remember I went up to Gulzar sahab and said, "Aap jayenge na?" Award hi to hai. So for us, it's an absolute honor to have him. Earlier I told Gulzar sahab, we want to do this in the Opera House, and he said, I really want to go there and see and relive some of the memories that I've had. Fortunately, we could do that. We chose Mrs. Guya's offer of hosting it here at SR House. So thank you. So, ladies and gentlemen, over to Gulzar sahab. Discussions, conversations, talks. So just to give you all a संजय जी, संजय राय, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा लंबा तारुफ करा दिया मेरा। ऐसे मैंने यूं नहीं कहा था कि अवार्ड ही तो है। आपने पूछा था कि आप जाएंगे क्या? मैं क्या देखते हैं, मेरे पास काला कोट नहीं है, अगर मैं क्योंकि मेरे पास काला कोट नहीं था, सो मैं नहीं जा सका, और वो बड़ा जरूरी था वहाँ की शाम के ड्रेस में। तो बहरहाल मुबारक आप सबको भी, और संजय जी, William sir, नमिता जी, worked so hard on this. तो ये 10वीं सालगिरह आप सबको मुबारक हो, जिसके लिए आप 10 मंजिलों तक पहुंचे। और जैसा उन्होंने कहा कि ये वाकई बांटने वाली बात है आपस में। मैं इजाजत है, मैं इसी तरह उर्दू में बात करूँ या हिंदी में, जो भी मुझे आती है, ताकि आपस में बांटा जाए सब कुछ, जो शेयर किया जाता है, क्योंकि फतूर दिमाग के खत्म नहीं होते। वो दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, उसमें बदमाशियाँ भी आती हैं, चालाकियाँ भी आती हैं, सिदक भी आता है, सदाकत भी आती है, सच्चाई भी आती है, बहुत कुछ होता है जो दिमाग में चलता रहता है। हाँ, जहाँ तक उसका ताल्लुक हमारे समाज से है या सोसाइटी से है, तो वो उनके साथ बांटना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है, उसकी जिम्मेवारी भी लेनी पड़ती है। वो चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, वो जिम्मेवारी बनती है। और इसलिए जाके जयपुर फेस्टिवल में खास तौर पर सीखने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है। वो जो गाना है, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनसे सीखते रहना होगा, वरना आप गलतियाँ तो करेंगे। तो सबके हाथों में लगता है कि एक लाल पेंसिल है, मैं कुछ गलत लिखा तो काट देंगे, नंबर नहीं देंगे। तो नंबर लेने के लिए जाते हैं, वहाँ देखें पासिंग मार्क्स भी मिलते हैं या नहीं, क्योंकि स्कूल में नहीं मिले थे तो मैं जयपुर फेस्टिवल में आया नहीं, वहाँ शायद पता चल जाए कितने पर्चे पास किए, कितने इम्तिहान दिए। और वहाँ जाके अक्सर ये हुआ है कि कोई अपनी किताब या नया सबक लिखा हो तो उसके लिए रिलीज के लिए पहुँचते हैं, बताइए, कुछ नज़में सुनाते हैं, कुछ शेर सुनते हैं। लेकिन घूम चूम के एक शेर था कि बात तुम पर ही खत्म होती है, हमसे चाहे कहीं की बात कर। अब हालत ये है कि बात फिल्म पर ही खत्म होती है, हमसे चाहे कहीं की बात कर। मुझे ज्यादातर सवाल जवाब वो फिल्म ही के देने पड़ते हैं। उस पर एक जुल्म और हुआ कि बॉब डिलन को प्राइज मिल गया, तो फोकस कहीं आप पर, कहीं आप जाने वाले तो नहीं है। अब
कौन सा कोट लगे और कौन बुलाए और कौन पहुंचे, कौन जाए, कौन अकेले। लेकिन उससे ये जरूर हुआ कि थोड़ा सा फोकस आया उनकी तरफ जो वो फिल्मों में गाने लगे। शायरी तो करते रहे, किसी के पल्ले पड़ी, किसी के पल्ले नहीं पड़ी, ना पड़ी तो सर मोड़ के बैठ गए अपने। लेकिन फिल्में तो आपकी आवाम तक जाती हैं, तो सब सुनते हैं, तो सवाल भी करते हैं। और बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे मेरे सामने जो मेरे मुद्दे हैं, मुझे टेस्ट करने वाले हैं, इम्तिहान लेने वाले हैं, वो एक शायर हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि मुझसे टेक्स्ट से बाहर का सवाल ना पूछें। स्वानंद जी के साथ इसलिए एक शख्स जिसको मिस कर रहा हूँ यहाँ इस वक्त, वो है जिनका जिक्र हुआ था कि रसूल आएंगे। रसूल को वाकई मिस करता हूँ। मैं जयपुर भी जाता हूँ तो वहाँ हवेली के पीछे एक छोटी सी जगह है, एक पेड़ है इमली का, और उसके नीचे बैठ के हम बातें करते हैं और उनकी शायरी सुना करते हैं। स्वानंद जी, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं माइक पे हाथ रख कर कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। आप पूछिए और अपना तारुफ भी लोगों तक पहुँचाइए। मैं अपना तारुफ, मैं अपने बारे में क्या बताऊँ। मैं भी फिल्मों में ही कुछ गीत लिखने का काम करता हूँ और शायद मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पे इस वक्त इतने अच्छे लोगों के सामने बैठा हूँ, गुलजार साहब के साथ बैठा हूँ, उनसे कुछ बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है। और गुलजार साहब, मैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, मैंने अपनी मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कुसुम और हम जो हमारी जनरेशन के लिरिसिस्ट हैं, हमारे सामने जो रेफरेंस पॉइंट्स थे उसमें हिंदी फिल्मों के लिरिक्स सबसे बड़े रहे, बजाय इसके कि कोई उर्दू शायरी का रेफरेंस हो या कोई और किसी तरह की पोइट्री का रेफरेंस हो। लेकिन हिंदी फिल्मों के गानों में और हमारी जनरेशन के लिए खास तौर पे आपके गाने हमें मुझे तो खास करके अगर मैं लिखने लगा तो शायद इसी वजह से लिखने लगा कि मैंने कुछ गाने आपके सुने थे, कुछ फिल्में आपकी देखी थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं आज 15-16 साल से इंडस्ट्री में मैं भी काम कर रहा हूँ, आपको लगातार लिखते हुए देख रहा हूँ, आपका लगातार लिखते हुए सुन रहा हूँ। आप अपने आप को इतना जवान कैसे रखते हैं? आपकी पोएट्री में भी और